Good morning, everyone. Good morning. Do you want me to play the meditation or you want to start the session straight away? I think we can play Aaj ka chapter से छोटा ही है ना? Okay. So let me quickly play the meditation. कर सकते हैं. Breathing deeply in and out, feeling relaxed. Our whole body is relaxed and comfortable. Breathing deeply into your eyebrow space, in and out, turning your attention around, becoming the observer. Breathing into this state of inner being, the observer. Become your inner being, starting in this space of awareness of all that you are and all that you are becoming. Using the power of your vision, of your mind, of your feelings to create, and the power of your belief, your faith in what you really are to bring life to you. We're going to tell the story of our appreciation. I am so grateful right now. I feel so much appreciation for the wonderful life I am living, for the momentum that is building, for all the things that are around me that I can be grateful for. I feel so grateful to have the awareness of who I really am, to see the truth of life and love. I am so grateful that I can feel my good feelings, that I have enough self-awareness that I can tell the difference between a good feeling and a not so good feeling. I am grateful that I can follow my good feelings to a life of fulfillment. I am grateful that I can slow down enough to hear my inner being, to feel what kind of awareness, to feel what that kind of awareness is like. I love this feeling. I love the feeling of becoming. I am grateful for this feeling. It helps me to see my manifestations made real. I am extremely grateful for all the people in my life. I am grateful for my friends, for my family, for my children. I am grateful for my clients, colleagues, and business associates. I am intensely grateful for my partner, my mother, my father. I am grateful for my inner being's closeness and connection to Source, to all that is, to God. I am grateful that I am finally becoming aware of who and what I really am, and are able to understand my role. The fact that I only need to focus on what feels good, and I will attract all that I need and want to achieve my desires. I am grateful for the flow of ideas and loving thoughts, which are becoming more prevalent in my mind with each day that passes. I am grateful for my good sleep. I am grateful for the days I wake feeling rested and renewed and eager.
I understand that if I have days when I don't wake like that, that there is another opportunity the following night. I am grateful to have found my purpose, to understand which direction I am going, and I am grateful for the understanding that if things are happening that are not in perfect alignment, that it is temporary, and the sooner I am able to let go and trust that everything will be okay, the sooner I get back into alignment again. I'm so grateful for this alignment feeling. I'm so grateful for all the signs and signals I get to see along the way, which assist me in as we both expand with moments of shared awareness. I am so grateful for that moment when we say in our hearts, I see you. I am grateful to you for listening. And I thank you for your openness. Breathing deeply in and out. Who is going to volunteer to read till Nikhil sir shares the screen? Yes, anybody is volunteering to read? कोई आप में से volunteer करेंगे पढ़ने के लिए? Yes. Yeah, I can read. Yes. Who is that? Shibha. Okay. एक थोड़ी सी shadow आ रही है बीच में. ऐसा क्यों आ रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा. 2 मिनट. So the today's chapter which we are going to all study is works like magic. आपकी जिंदगी में जो भी आप काम कर रहे हो, whether it is your job or whether you are at home, जैसे भी जो भी आपका कार्य है उसमें मैजिक कैसे लाएंगे, that is what this chapter is deal with, and you can see it in the picture. She's shown you a working desk. हाँ, उसके अंदर में उसके ऊपर वो मैजिकल लाइट्स पड़ रही है ना. So how will you bring magic into your work? And that work can be anything. So this is what we are going to study today, कि अपने काम में हम कैसे मैजिक लेके आएंगे. This is the day's thing which we are going to go through it. So yes, please, next page, Nikhil. And who was saying she will read? Yes. Yeah. Works like magic. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has never been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of music. Magic. Tom Robbins. Magic, realm of magic. Yeah, into the realm of magic. Tom Robbins. Tom Robbins, writer. Right. So this is what Tom Robbins had said, कि अगर आप किसी चीज को इतना इतनी passionately चाहते हो, that you want it, then you have to just delve into it, push yourself into it. You अपने उसमें आपको अपने जुनून से उसमें विलीन हो जाना है,
and then what will happen? Magically it will appear into your life. So that great Shah Rukh Khan's movies dialogue Om Shanti Om ka, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है. So that is what this whole words of Tom Robbins are telling you, that अगर आप किसी चीज को इतने दिल से चाहते हो, इतने शिद्दत से चाहते हो कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते, जुनून आप उसमें पैदा करते हो, तो सारी कायनात क्या है वो उसको आपसे मिलाने के लिए कोशिश करती है. So that is how that magically that thing will appear into your life, and you will, as the chapter proceeds, you will see how you will bring that magic into your life in the sphere of your work area. Yes, please go ahead, Shiva. How can it be that a person who is born into total poverty starts out with nothing and has very little education on to become a president or a celebrity, or builds an empire and become one of the wealthiest people in the world? And how is that two people can start in the same career, and yet one person's career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try? Next please. The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So, without gratitude, it's impossible to have permanent success. तो इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या आपको बताया, एंड ये अगर आप आसपास भी देखोगे तो आपको नजर आएगा कि कुछ लोग एक साथ शुरुआत करते हैं. पीपल हैव स्टडीड फ्रॉम द सेम स्कूल और दे हैव गॉट वेरी गुड ग्रेड्स, एवरीथिंग, but some people go on to be, even without the grades, even without these things, they will go on to become more successful. They may not be the most intelligent person in the class, है ना, सबसे कम उसको अच्छे grades नहीं भी मिले होंगे, लेकिन they go on to become successful in life. And then there are people who have come out from poverty. हमारी दिस थिंग कंट्री में भी आप देखोगे कि सुनने को मिलता है कि वो ये था एंड द पर्सन वेंट ऑन टू बिकम अ IAS officer or things like that. So you just hear that people start from poverty and they go from rags to riches story. तो क्या ये ऐसी क्या बात है कि ये इतना कॉन्ट्रास्ट में ऐसे होता है? तो कुछ क्या, और कितने लोग हैं जो बहुत लेबर कर रहे होते हैं, हार्ड लेबर कर रहे होते हैं, तब भी उनको सक्सेस नहीं मिलता है, even though they are working hard, but others get it very easily. What is that thing जो इतना उनको कनेक्ट करती है? That connection is the thing that how magically things appear into your life, how magically work is affected for you, and this all depends, जैसे ये किताब ने शुरू से हमें बताया है कि आप कितना शुक्राना करते हो, how much gratitude you have in your life for it. That is what is going to control the things which are walking into your life or which are appearing into your life, which are जो कि आपके ड्रीम से रियलिटी बन रही है, जो आपके ड्रीम से रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है, because everyone dreams about it, but how do they convert it into reality? This is the whole key which she is giving you, is the key of gratitude, to open the lock of your dreams and convert them into reality. आप इस ग्रेटिट्यूड की चाबी से अपने किस्मत के ताले खोलते हो, अपने जो ड्रीम्स हैं उनको हकीकत में तब्दील करते हो. ठीक है, तो यस, आगे शिबा, नेक्स्ट पैराग्राफ. To bring success, can you unmute yourself, Shiba? You have muted your. You can't. Okay, Nikhil, can you unmute her? उसको mute हो गई है वो. He must have muted everyone. Some sounds were coming. Yeah. Okay. To bring success or increase the goods in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life,
you have to be grateful for what you already have. Whoever has gratitude for their work or will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her. When you are grateful for your job, you will automatically be given. Just wait here, Shiba. Just wait. Yeah, because Nikki, you have to change the page. I don't know. मेरे यहाँ change नहीं हो रहा है या क्या हो रहा है? No, it's not changing. So how do you bring that success or increase the things you want in your life, in your work area, and whatever is related to your job or your career or your even in your house? If you are staying at home and you are a housewife and you are looking at the things, you know, you want to improve something in your child or in your cooking, और या घर को मतलब मैं घर में कुछ चीजें आपको लगता है कि हाँ मैं ये सब ऐसे सजाऊं, whatever it is, you know, in your work area, whatever your sphere of work is, जो भी आपका काम का जरिया है, जहां पर भी आप की इच्छाएं हैं कि आपका काम का एरिया इंप्रूव हो और उसमें इंक्रीज हो, इजाफा हो पैसे में, या अगर आप जॉब कर रहे हो, करियर कर रहे हो, तो उसके लिए पहले आपके पास जो भी है, you know, you want to climb the ladder of success, आप आगे की सीढ़ी चढ़ना चाहते हो, आप अपने जॉब में प्रमोशन चाहते हो, लेकिन उसके पहले आप जो कर रहे हो, क्या आप अपने जॉब को ग्रैटिट्यूड दे रहे हो? एंड ग्रैटिट्यूड हमने हर बार बताया है आपको, ग्रैटिट्यूड कम्स विद फीलिंग्स। ये नहीं कि क्या सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस क्या है वहां। आपके जॉब में हो सकता है कि लोग आपका साथ ना दे रहे हो और आपको ही ज्यादा बर्डन पड़ रहा है काम करने के लिए, आपको ज्यादा करना पड़ रहा है और लोग मस्ती कर रहे हैं, वो अपने बॉस के साथ अच्छे रिलेशनशिप है तो उसी में फायदा हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, आपका बॉस आपके ऊपर ज्यादा नाराज होता है, whatever it is, you know, there might be all circumstances could be different, आसपास परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी अगर आप अपने जॉब को प्यार कर रहे हो, बिकॉज ग्रेटिट्यूड विल कम विद द थिंग्स इन योर हार्ट, द फीलिंग्स। ग्रेटिट्यूड सिर्फ लिखने से नहीं आएगा कि हाँ आई एम थैंकफुल फॉर माई जॉब, लिख दिया, लेकिन जब तक उसमें आपने इमोशंस नहीं डाली हैं, फीलिंग्स नहीं डाली हैं, तब तक उस ग्रेटिट्यूड का कोई मतलब असर नहीं होगा। क्योंकि मैंने बहुत पहले से शुरू से बताती आ रही हूँ कि ये एनर्जीज की दुनिया है, एंड एनर्जीज मूव इन waves, you know, they will move in particles, they are quantum physics के हिसाब से क्वांटास है, पैकेट्स ऑफ एनर्जीज है, तो वो एनर्जीज जैसी एनर्जी से आप उसको धक्का मारते हो, अगला पार्टिकल उसी एनर्जी से आगे जाता है, तो उतने वो ये से कंप्लीट होके आपकी तरफ यूनिवर्स जो है चीजें लेके आएगी जो आप चाहते हो। तो कितनी एनर्जी से, कितनी फीलिंग से आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, वो बहुत बहुत मायने रखता है, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इसीलिए मतलब अगर मैं शॉर्ट में कहूँ और आपकी अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहूँ आपको कि समझाने के लिए, अगर मैं एनर्जी भी नहीं बोलूं, तो ये है कि अगर आपने अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस का कंट्रोल बटन जो है, जैसे वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं, ऊपर हो गया, ज्यादा हो गया या कम हो गया, तो वैसे कंट्रोल करते हैं, वैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल में ले आए, आप उसको समझ पाए कि कितनी इमोशन आपको डालनी है इसमें और कैसे आप उसको फील कर रहे हो, एंड क्या आप उस पर बुरा फील कर रहे हो या अच्छा फील कर रहे हो, ये भी बहुत मायने रखता है किस तरह का आपकी फीलिंग्स आ रही हैं। सो ये शुक्राना जो है ये पूरा फीलिंग से लदी हुई चीज है, तो इसमें खाली शुक्राना करने से या लिखने से नहीं होगा, वो फीलिंग्स भी आपकी आनी चाहिए, और वो रियल फीलिंग्स होंगी तभी वो वर्क करता है, तभी वो मतलब पावर स्टेशन जो है ना आपके अंदर का, वो सही दिशा में जाता है तभी। Yes, Shiba, please. Nikhil, the page has to go next page, right? When you are, She has read the code. Whoever has, have you Yes. read? You have read this, na? She has read Yes. the. Oh, When you are grateful for your job, you will automatically be given more work, more to your work. And when you will give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically receive less. When you give less,
you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than what you have to. And your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they will be taken from them. तो जब तक आप अपने जॉब के प्रति अच्छे से काम नहीं करते हो, आप जो भी है, मैंने आपको बोला कि आपका काम जो भी है उसमें जब तक आप पैशनेटली इन्वॉल्व नहीं होते हो विद फीलिंग्स, पैशन इज फीलिंग्स के साथ जितना इमोशंस आपका आता है, जो मैंने इलेक्ट्रिकल चार्ज बोला था, इमोशंस इज योर फीलिंग्स विद अ चार्ज, जो इतनी पैशनेटली फील करते, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन इमोशंस एंड फीलिंग्स आल्सो. सो आपके वो मतलब उसमें से फीलिंग्स के का रस निकलना चाहिए, आपका टपक रहा होता है जैसे रस ना, जितना फल पका होता है तो रस उसमें से इतना अच्छा निकलता है, संतरा है या नींबू है, मतलब रसदार होता है, तो वो जो रस आपके फीलिंग्स के अंदर से जब निकलता है तब आप अपने काम में ज्यादा ध्यान देते हो. आप जितना ज्यादा काम करते हो उतना आपका मनी इंक्रीज होता है, उतना आपका सक्सेस इंक्रीज होता है. एंड दिस इज हाउ यू आर शोइंग योर ग्रेटिट्यूड. आप अगर अपना शुक्राना कर रहे हैं अपने जॉब के लिए, तो वो शुक्राना नजर भी आना चाहिए. वो शुक्राना सिर्फ लिखने से नहीं और यहाँ से नहीं कि हाँ मैं तो रोज रोज शुक्र कर रहा हूँ, बॉस का भी कर रहा हूँ, काम का भी कर रहा हूँ, लेकिन वो उस पे प्रभावित करना चाहिए उसको वहां पर एनर्जीज वैसी आनी चाहिए. सो हाउ मच डू यू लव योर वर्क, ये पहले सोचो आप, और क्या आप उसको पसंद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. तो अगर आप नहीं कर रहे हो, अपना जॉब ही आपको अच्छा नहीं लग रहा है, एंड दिस एनर्जी लेवल वर्क्स विद बोथ वेज, अगर आपको जॉब अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी फीलिंग्स उसमें नहीं आ रही हैं, तो स्लोली स्लोली क्या है, आपका शुक्राना इसका मतलब उसमें कम हो रहा है, और आस्ते आस्ते क्या है वहां एक बहुत बड़ा ऐसे ब्लॉकेड हो जाएगा और आपका जॉब आपके हाथ से निकल जाएगा, या आपको आपका बॉस निकाल देगा, या आप खुद ही छोड़ के चले आओगे. आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या मेरे ऊपर हुआ और मैंने क्यों रेजिग्नेशन लेटर लिख दिया, या मतलब इट विल हैपन इन सच अ मैकेनिकल मैनर कि आपको एहसास ही नहीं होगा. जैसे मैं अच्छी चीजों के लिए कह रही हूँ, वैसे ही बुरी चीजें भी ऐसे ही होती हैं. उनका कहना, रोंडा कह रही है कि अगर आप शुक्राना नहीं कर रहे हो अपने जॉब के लिए, अपने काम के प्रति, तो आप वहीं स्थिर हो जाओगे, क्योंकि आपका मोमेंटम नहीं बढ़ रहा है, एनर्जीज नहीं मूव कर रही हैं. ठीक है, तो वो नेगेटिव एरिया में वर्क करेंगी. अगर आप उसको पसंद नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, वो उसी नेगेटिव डायरेक्शन में चीजें चलने लगेंगी. सो यू विल लूज योर जॉब और यू मे नॉट गेट द हाइक यू वांटेड. सो इसीलिए बहुत बहुत ध्यान रखना है कि आप कितने हद तक अपने काम के प्रति योगदान दे रहे हो, कितना उसको शुक्राना दे रहे हो, कितनी उसमें फीलिंग्स ला रहे हो. सो चेक, ऑलवेज चेक योरसेल्फ, आप क्या कर रहे हो. क्या आप अनमने मन से ही किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, अपने बॉस को या अपने काम को भी क्रिटिसाइज करते हैं, यार मुझे तो इतना बर्डन है, मेरे ऊपर तो इतना काम लाद देते हैं, सारे लोगों को तो कम मिलता है, मुझे ज्यादा मिलता है. सो दिस इज ऑल्सो अननोइंगली, अनकॉन्शियसली आप क्या कर रहे हो, आप शुक्राना नहीं कर रहे हो, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो. हमने आपको बताया है, आप क्रिटिसाइज करते हो, कंप्लेन करते हो, दैट मीन्स आप शुक्राना की दुनिया से दूर जा रहे हो. सो द मोमेंट आप क्रिटिसाइज करते हो, कंप्लेन करते हो, हमने आपको एक कंप्लेन मीन्स 10 ग्रेटिट्यूड्स देना है. सो 1:10 की रेशियो में आ जाता है. अब जितना आपने उसको एक कंप्लेन करके नीचे गिराया है, जितना आपका नेगेटिव स्फीयर में चला गया है, उतना ऊपर उठने के लिए आपको 10 बार शुक्राना करना पड़ेगा. एंड ऐसे ही नहीं 10 बार, वो फीलिंग्स के साथ. तो पहले ही तो आप नेगेटिव लाइन में चले गए हो, तो उसमें से उभरने के लिए सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको. उसमें से निकल के फिर 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखना फीलिंग्स के साथ, तो वो फीलिंग्स को दोबारा लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है. सो ऑलवेज ट्राई एंड सी कि आप पॉजिटिविटी से हर चीज को देखो, हर चीज को पॉजिटिविटी से देखो. राइट? यस, प्लीज गो अहेड. The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give.
If you're a business owner, your business's value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downward. तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात बोल रही हैं और ये आगे वाले पैराग्राफ में एज अ पेरेंट भी अगर आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हो उस पे भी आएगा कि कैसे अगर आप शुक्राना नहीं करते हो एंड कैसे आप नेगेटिव फीलिंग्स की दुनिया में रहते हो, मतलब नेगेटिवली सोचना। एक होता है पॉजिटिव फीलिंग, कुछ सर्कमस्टेंसेस नेगेटिव हो सकते हैं आपकी जिंदगी में, पर क्या आप उसको पॉजिटिवली देख पाते हो, उसको पॉजिटिवली परिवर्तित कर पाते हो? सो आपकी जिंदगी में दोनों चीजें होने वाली हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये नहीं होने वाला सारा दिन दिन रहेगा, यू विल गेट बोर्ड। तो दिन के बाद रात आएगी, रात के बाद फिर दिन आएगा। तो ये तो चक्र चलता ही रहेगा। लेकिन उस समय जब बिल्कुल रात को अंधेरा है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, क्या उस वक्त को, उस मोमेंट्स को भी आप एंजॉय कर सकते हो? क्या आप उसमें भी खुश रह सकते हो? क्या उस समय भी आप शुक्राना कर सकते हो? तो ये है कि आपका अगर बिजनेस है या आपका करियर है या जॉब है या एज अ पेरेंट है, आप कितना ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड दिखाते हो। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द सर्कमस्टेंसेस इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है उससे कोई संबंध नहीं है आपके शुक्राने का। ये नहीं है कि आपको अच्छा लग रहा है तो आप शुक्राना करोगे, आप अच्छे हैप्पी फील कर रहे हो, वो ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं जब आपके साथ गलत हो रहा है और तब भी आप शुक्राना कर रहे हो। दैट इज द पॉजिटिव फीलिंग। इट इज नहीं कि आपकी जिंदगी में नेगेटिव होता है, आपकी जिंदगी तब भी आप अगर पॉजिटिव रहते हो, दैट इज द टाइम व्हेन यू आर एक्चुअली आप शुक्राना कर रहे हो। और अगर आप बिजनेस के केस में उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं शुक्राना करते हो तो आपका बिजनेस भी नीचे जा सकता है। आपको हर एक चीज में ग्रेटफुल होना होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अपने कस्टमर्स के लिए, अपने क्लाइंट के लिए जिसको सर्विस दे रहे हो, एंड आपके लिए जो मतलब जिस तरह से भी आपके एम्प्लॉइज हैं, तो एवरीवेयर यू हैव टू शो, एवरी कॉर्नर, एवरी स्फीयर में आपको ग्रेटिट्यूड दिखाना है। ये नहीं कि सिर्फ आप अपने बिजनेस तरक्की करे इसके लिए शुक्राना कर रहा हूँ, बिजनेस अच्छा हो रहा है इसके लिए। नो, यू हैव टू सी व्हाट आर द एलिमेंट्स आपके वर्क एरिया में, वो कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन सी चीजें हैं जिनका योगदान आपके काम पे, आपके बिजनेस पे, आपके घर पे पड़ रहा है। उन सारे एलिमेंट्स को, उन सारी चीजों को, उन सारी इवन वो सिचुएशंस को आपको शुक्राना देना बहुत बहुत अनिवार्य है, ताकि आप हमेशा जिंदगी में तरक्की करते रहें। I would like to share here. Yes, please, Nikhil, go ahead. Because जो हम business जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, so I am probably मैं आपके सामने बैठा हूँ, I am a living example of this. My business, my father had started, मेरा मतलब business start किया था more than 35 years ago, और उनका खुद का experience is more than 50 years. So जब बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड ऑन हिज ओन, उन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, इज अ सेल्फ मेड मैन, और क्या कहते हैं, बहुत अच्छा चल रहा था बिजनेस, एंड आई हैव सीन द ट्रेमेंडस हाइज द बिजनेस हैड अचीव्ड विद माय टर्नओवर रीचिंग ऑलमोस्ट अराउंड 50 CR in 2005 2006 कंटिन्यूअसली बहुत हाइज देखे। एंड देन somehow probably क्या कहते हैं, धीरे धीरे, जैसे मार्केट तो हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, लाइफ भी सिमिलर इज लाइक दैट, और जैसे जैसे मार्केट नीचे आने लगी तो उस हिसाब से फिर वो जो ग्रैटिट्यूड था प्रॉब्ली वो फॉर ग्रांटेड हो गया, और क्या कहते हैं, लाइफ में फियर ने जगह ले ली कि क्लाइंट्स पेमेंट्स नहीं कर रहे थे वापस, सारा पैसा मार्केट में फंसा हुआ था, बैंक्स की लोन्स थे एंड एवरीथिंग, एंड बिल्कुल ऐसा सिचुएशन हो गई कि मैं और मेरे फादर बैठ के ऑल द टाइम वी वर नेगेटिव, सिर्फ हम क्या कहते हैं बिजनेस को बंद करने ऐसी बातें करते रहते थे कि कुछ और ट्राई करते हैं, समथिंग एल्स, बट वी नेवर रियलाइज्ड, मतलब क्या कहते हैं, क्योंकि ये चीज उस टाइम लाइफ में आई नहीं थी प्रॉब्ली, एंड इट वाज मतलब ऐसा टाइम आ गया जैसे हम क्या कहते हैं रॉक बॉटम कहते हैं, रॉक बॉटम भी हिट कर गए,
but then you can only get as much pain as you can. आप उसको जितना मतलब उसको जितना ले सकते हैं, प्रॉब्ली ऊपर वाला ये देखता है कि ये कितना और ले सकता है उसको. एंड देन मैजिक बुक आई हमारी लाइफ में. मी माय फादर हमने दोनों ने साथ में करी है इसको. एंड उस टाइम जो वो रॉक बॉटम था, वो ऐसा लगता है कि इट वाज लाइक ट्रैम्पोलिन की तरह था, जिसने कि हमारे को एक बिल्कुल नीचे ले जाके इतना ऊपर वापस छोड़ दिया है कि उसको हम जितना क्या कहते हैं उसको ऊपर ले जा सकते हैं. दैट इज थ्रू ग्रैटिट्यूड एंड आवर मतलब जो भी हम ले जा सकते हैं वो हमारे हाथ में. हम कितनी ऊंची उड़ान मार सकते हैं आज के टाइम में. So this is like I've felt it, and this I wanted to share with all of you. So wonderful sharing, निखिल, wonderful sharing. So ये बिजनेस के कंटेक्स्ट में निखिल ने बिल्कुल अच्छे से शेयर कर दिया है कि कैसे आपको जिंदगी में मतलब मैजिक्स होते हैं, और अगर आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो, हाउ योर बिजनेस इंक्रीजेस एंड हाउ इट डिक्रीजेस आल्सो. बोथ थिंग्स ही हैज शोन यू इन दिस एग्जांपल, एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल. अगर आप अपनी अपनी जिंदगी में झांकोगे, अपनी जिंदगी में देखोगे, तो आप भी पाओगे आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं. एंड देन अगर आप स्टडी करोगे तो देखोगे आपने कितना वरी किया है उसके लिए, जिसकी वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम आई थी. एंड अगर आप उस पर शुक्राना करना शुरू करते हो, that will actually show you कि वो वापस आपके पास आती है. एंड दैट रियली रिमाइंड्स मी, मैं जॉब करती रही हूँ सारी जिंदगी, and I was the at a turn in my life I became the primary breadwinner of my family. I was earning more than my husband, so that makes me a primary breadwinner, you know. So अगर मेरा जॉब नहीं होता था तो हमारा ठीक से नहीं चल पाएगा, ये हाल था. एंड देन व्हेन आई वाज वांटिंग, यू नो, समटाइम्स यू फील, मैंने आपको बोला है कि आपकी फीलिंग्स नेगेटिव होती हैं और आप उसको पॉजिटिवली कैसे देखते हो, ये भी बहुत जरूरी होता है. मतलब एक जॉब अगर आपको पसंद नहीं है तो उसमें से हट जाना बेहतर है, इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग एंड स्टेइंग देयर, बिकॉज देन इट फॉल्स डाउन. तो ऐसे ही कि मैंने अपनी जिंदगी में जब मेरे को एक जॉब अच्छा नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर मुझे बहुत दिक्कत आ रही है. एंड दिस इज, यू नो, द आई एक्चुअली डिडंट लाइक माय बॉस बिकॉज ही वाज हैविंग अ बैड बिहेवियर. तो मैंने उस जॉब को लिटरली मैंने कहा कि मैं इसमें नहीं रह सकती हूँ, आई हैव टू रिजाइन फ्रॉम हियर बिकॉज द बैड फीलिंग्स आर अफेक्टिंग मी बैडली. अब मैं घर पे, मेरा बच्चा भी है और मैं जाती हूँ तो मुझ में भी चिड़चिड़ापन आ रहा है. So I just put in my resignation letter and gave him 1 month notice. And you won't believe it, because मेरे कमाने नहीं कमाने से जिंदगी में कुछ होगा नहीं. But I actually loved my job. मैं जो करती हूँ, I am very passionate about what I do in my job. तो जब मैं पैशनेट थी और रेजिग्नेशन देने के बाद एंड व्हेन आई केम होम एंड सेड, माय हस्बैंड, माय मदर, माय फादर, एवरीवन सेड, क्या पागल है, इतना बढ़िया जॉब मिला था, उसको छोड़ के आ गई है, क्या करेगी तू, अपना रेजिग्नेशन वापस ले ले एंड ऑल. आई सेड नो नो, आई विल गेट इट. एंड दैट पॉजिटिव फीलिंग कि नहीं, मुझे अगर अपनी मम्मी से मैंने ये बोला कि तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया है, कैसे हो सकता है कि मुझे अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा. सो दैट थिंग, यू नो, दैट ड्रीमिंग दैट आई वाज सो पैशनेट कि नहीं, मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए. एंड जैसे ही मैंने अप्लाई करना शुरू किया, यू वोंट बिलीव, विद इन अ मंथ वो जॉब से मैं निकली और ये दूसरा जॉब ऑलरेडी मेरे हाथ में था. That is how magic works. When I came back and I saw कि there was a job, and उस समय मेरे माइंड में ही तमन्ना थी कि मैं ना अब काम करूंगी तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में करूंगी. एंड आई केम बैक, आई सॉ ऑन द डेवनेट, आई सॉ देयर वाज अ जॉब जिसकी लास्ट डेट वही दिन थी जब मैं रेजिग्नेशन दे के आई थी. रात को 12 बजे बैठ के मैंने उसको सीवी को डाला, एंड नेक्स्ट डे, एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट से मुझे कॉल आएगी, मुझे कॉल आएगी. First round, second round, third round. By the time I reached the third round, I came out of the interview hall and I told my husband, ये मुझे मिल के रहेगा, तुम देखना. And within 2 days, the person called me and said, ma'am, the job is yours. Please let us know when you will join. So this is how, you know, how आप अगर आप किसी चीज को इतनी बेकरारी से चाहते हो और आप उस पर ग्रेटिट्यूड होता है, लाइक व्हेन आई वाज टेलिंग माय मदर कि तुमने मुझे पढ़ाया, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू. मैं तो, मुझे मिलेगा, आई एम केपेबल. एंड यू हैव टू हैव द बिलीव, यू नो, जो निखिल सर हमेशा पोस्ट करते हैं, आस्क, बिलीव, रिसीव. So that is also a way, you know, you get things in your life. So everything works in tandem: the gratitude, the manifestation, the visualization, and believing that you will get it. So this is how things work in your life. And this chapter is totally dealing in your work sphere. Next paragraph में हम देखेंगे कि अपने घर पे कैसे आपको मिलता है.
बिजनेस एंड जॉब का हमने बताया, अब आप देखिए घर पे कैसे मिलता है. यस प्लीज गो अहेड शिबा. If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity. And when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. So in this paragraph, she's telling you that when you are taking care of your, so all this is for people who are housewives or who are working from home also. कुछ लोग अपने घर से भी business करते हैं या कैसे करते हैं, लेकिन at the same time they have a divided interest, work में भी family को भी देखना होता है, और you are purely a housewife और आप domestic life को ही देख रहे हो. तो वो आप क्या कर रहे हो कि आप जो उस पे कर रहे हो, अगर आप वरी करते हो अपने बच्चों के प्रति, अब आपने उनके बारे में आप उस समय क्या कर रहे हो, आप नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो. व्हेनेवर यू आर वरिंग, व्हेनेवर यू आर गेटिंग इनटू दैट स्फीयर ऑफ वरी, आप वरी करोगे तो दैट्स अ नेगेटिव थिंग ना. किसी भी चीज के लिए वरी करते हो, यहाँ आप अपने मेरा जॉब ना चला जाए, मेरा जॉब ना चला जाए, उसमें वरी कर रहे हो, देन ऑल्सो दैट थिंग विल अपीयर. सो वॉट एवर इज यू आर डूइंग व्हेन यू आर वरिंग कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, मेरा बच्चा ठीक ठाक रहे, यू नो वॉट एवर वे में यू आर वरिंग, यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू नॉट गिव ग्रेटिट्यूड फॉर द थिंग्स एट योर हाउस वेयर. और अगर आप सोचते हो मेरा खाना अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा एंड यू आर वरिंग, तो वो ठीक से नहीं बनेगा. सो दैट इज द थिंग व्हाट शी इज सेइंग कि ग्रेटिट्यूड को देने के लिए आपको हमेशा पॉजिटिव फीलिंग्स की दुनिया में रहना पड़ता है, पॉजिटिवली सोचना पड़ता है, एंड हर चीज को पॉजिटिव वे में देखना पड़ता है, उस पर बिलीफ भी रखना पड़ता है, अपने आप को बिलीफ में रखना पड़ता है कि यस दिस इज गोइंग टू वर्क, yes this is going to happen, and you have to be in the positive side and then keep on giving gratitude to whatever you have. If you have a good house, give gratitude for that. If you have good children, कितने लोगों के बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, you ask those people जिनके बच्चे नहीं हैं, कितना तरस जाते हैं. So give gratitude for having children, not get worried कितना भाग रहा है, इतना तंग कर रहा है मुझे. Don't feel that way. Okay, so enjoy every moment of your life, and when you enjoy, when you are happy, when you are celebrating whatever you have in your hand, जब आप उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हो, that is how the gratitude में आपकी फीलिंग्स आ रही हैं. आप एंजॉय कर रहे हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप हैप्पी फील कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर एक्चुअली गिविंग गुड फीलिंग्स टू whatever is there in your hand, whether it's your job, it's your business, or it's your house job, whatever it is. So that is how you are celebrating the good things in your life. Yes, please go ahead. You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work, and you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way you receive your dream job is by first being grateful for the job you have. Today, imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for. So at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. So this is what Rhonda has this way of making things a little playful. अब अगर आपको ही बोला जाए कि आप gratitude ढूंढो कि आप क्या क्या जॉब में है, तो she has made this like a game, कि you imagine, आप सोचो कि आपके साथ साथ आपका मैनेजर घूम रहा है. तो जॉब में आप जिस जिस जगह पर आपको लग रहा है ग्रेटफुल, वो मैनेजर आपका नोट कर रहा है, जहां जहां आपको लग रहा है. सपोज यू माइट फील ओके आई एम ग्रेटफुल फॉर माय जॉब बिकॉज आई गेट द
पे पैकेट तो मिलता ही है ना, चाहे वो आपको जॉब पसंद आया या नहीं आ रहा. सो ट्राई टू हैव ग्रेटिट्यूड कि हाँ मुझे एंड ऑफ द मंथ में अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, तो उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो. आप लिख सकते, उसके लिए हो सकता है देन यू माइट नोट कि ओके इन दिस जॉब यू नो आई हैव गॉट मेनी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज. बहुत सारी मैंने ऐसे है कि मुझे ट्रेनिंग्स अटेंड करने को मिली हैं, अपने कंपनी ने मुझे भेजा है जिससे कि मेरी स्किल्स बढ़ गई हैं. So that is how then you feel gratitude for that. You can feel gratitude for the people you have met in the company and who have enriched your life in some way or the other. You can learn from a negative thing also. So learning depends on you. और वो अगर लर्निंग हुई है आपको तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो. So she says that you imagine that the manager is going, अगर मैनेजर डंडा लेके आपके सामने खड़ा है और आपके साथ साथ घूम रहा है तो naturally you have to do all the things good. So that's why she's made this a game, you know, कि एक मैनेजर आपके साथ साथ जा रहा है और आपको देखना है कि कहाँ कहाँ आपको ग्रेटफुलनेस और आपका ग्रेटिट्यूड आपको फील हो रहा है अपने काम के ध्यान पे. तो आप उसके बारे में पूरी तरह से लिख सकते हो. यू कैन इवन थिंक कि द स्पेस ऑफ द ऑफिस इज वेरी वंडरफुल, द ऑफिस इज डेकोरेटेड वेरी वेल, इट इज वेरी वेरी वेल केप्ट. तो उस पे भी आप अपना शुक्राना कर सकते हो कि माय गॉड इतना बढ़िया सा ऑफिस है, काम करने के लिए मिलता है, आता हूँ तो एम्बियंस इतना अच्छा लगता है. सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. तो कुछ भी क्योंकि कि मतलब आपका मैनेजर आपके साथ घूम रहा है तो कौन कौन इस चीज को वो नोट करेगा आपके लिए, वो आपको ध्यान रखना है. So that is how she's made this exercise a little playful. Yes, please, go ahead. Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time-saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. तो ये उन्होंने, मैंने आपको बोला रोंडा मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो ना आपका हाथ पकड़ के आपको चलना सिखाती है. तो आपको अगर अपने जॉब में किस किस चीज पे ग्रेटिट्यूड देना है वो भी उसने आपको लिख के बता दिया है कि इन इन चीजों को नोट कर सकते हो और इस पे आप शुक्राना कर सकते हो. इसमें से कुछ ना कुछ तो आपके पल्ले पड़ ही रही होंगी, है ना. स्पेशली जॉब है आपके हाथ में, ये तो सबको बखूबी समझ आ गया पैंडेमिक के दौरान. जो लोग नहीं भी समझते जॉब का क्या है, वो आज नहीं कल मिल जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है, हम मुझे मिल जाएगा. जैसे मैं भी आपको कह रही थी कि हाँ मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो मुझे जॉब क्यों नहीं मिलेगा. बट द पैंडेमिक रियली रियली ओपनड आवर आईज कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, लेकिन जॉब नहीं है, आपको निकाल दिया गया है. सो मेनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स. कितने ऐसे लोग हैं जिनके काम चले गए, दे हैड नो जॉब्स. They were asked to stay laid back, you know, from the companies. They were laid back. So क्या बोलते हैं उसको, laid down. So तो ये पैंडेमिक ने सिखा दिया है कि जॉब होना भी कितना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपके पास एक जॉब है. So from that she's taking you to all the small things कि क्या आप नोट कर सकते हो. Yes, आगे पढ़े. There is a question in the chat. She's asking how to give gratitude as a homemaker. Can you give some examples? Shiva, please don't read the questions. Finish the chapter first. We'll come to the questions. Okay, sir. You can also, the chat is visible to everyone. Okay, please take sure. it. Okay. Have your invisible manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I'm grateful for what? The more deeply your manager can see you're feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you could see the circumstances instantly improve.
Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude's magical power at work. Okay, finish the chapter. If this works, okay. Small paragraph. If this works like magic, magic practice falls on a weekend or when you're not at work, move on to the next day's practice or practices and then go back and use this magical practice on the first day you're back at work. हाँ, तो लास्ट पैराग्राफ हमारे लिए नहीं करता क्योंकि हम ऑलरेडी वर्किंग डे पे हैं एंड वी आर अंडर वर्किंग, सो वी कैन ऑल गिव ग्रेटिट्यूड टू व्हाटएवर वर्क वी आर डूइंग in our life and we can write our gratitudes today itself. Yes, please go ahead. Magic practice number 6. Magic practice number 6 works like magic. First, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write you are grateful. Reread your list. Why you are grateful. Write why you are grateful. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. While at work, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. Third, have your manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I'm grateful for what? Feel as grateful and feel grateful as you can. Last, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. So thank you Shiba for reading it so well. So आपको ये exercise में in each of the days the exercise begins with your count your blessings and it ends with saying giving gratitude to the most beautiful thing that happened during the day. तो रात को भी आप gratitude पे सोने जा रहे हो, शुक्राना करके सोने जा रहे हो, उठते सारी आप शुक्राना कर रहे हो. So this will enhance the field how and creating, you know, ये आपका soil create कर रहा है. जैसे मैंने आज से भी बोला था कि soil में अगर आप बीज बोना चाहते हो, if you want to attract things, you have to build the field around you. वो field को build करने का तरीका सबसे best जो first and last exercise है, and then उसको और भी उसमें खाद डाल रहे हैं हम कैसे कि हम जो जो chapter कर रहे हैं उसके लिए भी कैसे gratitude देना है. तो आपके सारे dimensions of your life will be slowly getting sorted out. You will see कि how आपका perception हर एक चीज में चेंज होता जा रहा है. आपका अभी आज हमने काम के बारे में पूछा, किसी ने उस दिन क्वेश्चन किया था कि मुझे मेरा बॉस पसंद नहीं है तो हाउ. सो दैट्स व्हाट आई हैड एक्चुअली सेड कि यू हैव टू एक्चुअली शो शुक्राना करना है जो है आपके पास. जब आपके पास जो है उसके लिए शुक्राना करते हो तभी आप जो चाहते हो तो वो ये है कि उसमें आप जो भी चाहते हो वो आपको प्राप्त होगा. बट जो आपके पास है उसके लिए ही अगर आप शुक्राना नहीं करते हो तो जो आप चाहते हो उसको आप अट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपने वो फील्ड क्रिएट ही नहीं किए. तो वो आके नहीं गिरेगा आपके पास आएगा नहीं. जितनी मर्जी आप मेहनत कर लो. तभी उसने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसने कहा था कुछ लोग हैं इतना काम कर रहे होते हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, फिर भी दे कांट अचीव दैट लेवल ऑफ सक्सेस व्हिच दे आर एमिंग एट. So that is the basic difference between how some people get it sooner, some people have to really struggle hard for it. Okay, so that's all about things. And if you also think of some stories, you know, which go about how to sharpen your axe. वो story है कि अगर पेड़ काटने के लिए एक बंदे को सबको दिया गया तो एक बंदा था जो उसने बहुत अच्छे से जल्दी पेड़ काट रहा था. तो उससे पूछा गया कि तुमने कैसे हाउ अब बाकी सब कोई भी कर रहे हैं लेकिन वो इतना नहीं कर पा रहे हैं. तो उसने कहा कि जब सब कोई दौड़ गए थे अपना एक्स लेके पेड़ काटने के लिए, मैं क्या कर रहा था, अपने एक्स को शार्पन कर रहा था. The first 1 hour of the day he used to just to sharpen his axe. तो जब भी आप कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं जिंदगी में, ये आपको ग्रेटिट्यूड्स देने के लिए आपको अपना एक्स आप शार्पन कर रहे हो.
सो जैसे जैसे ये किताब बढ़ती जाएगी, बाय द एंड ऑफ द 28 डेज आप देखोगे आपका जो एक्स है वो काफी हद तक शार्पन हो गया, एंड यू विल सी स्लोली स्लोली, अभी आप छोटे छोटे ड्रीम्स अट्रैक्ट कर रहे हो, फिर आप बड़ी बड़ी चीजें अट्रैक्ट करने की भी काबिलियत, आपकी पावर बढ़ जाएगी, right? So this is all about today's chapter, and if you any of you wants to share, because sharings भी होनी बहुत जरूरी है, ताकि किसी की जिंदगी में कुछ हो रहा है या कुछ परिवर्तन आया है तो वो शेयर करेंगे तो आप दूसरों को मोटिवेट करते हो. So please come up with sharings, those who want to share. And Yes, I want to share with you. yes, please. I'm a housewife and my name is Ritu. हाँ. First of all, thank you आप लोग को कि आपने ये शुरू किया, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर फिर से बना मॉर्निंग में उठ के मैजिक करने का. अच्छा, मैं बोलना चाहूंगी कि मैं हाउसवाइफ हूँ, बट समहाउ मेरा ड्रीम ही था बचपन से. आई ऑलवेज यूज्ड टू लुक एट माय मदर एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज से दैट मेरे को इसी तरह बनना है. हाउ शी मैनेजेस एवरीथिंग. तो मैं बन गई हाउसवाइफ. आई हैव कंप्लीटेड माय बीकॉम ऑनर्स एंड देन मेरी शादी हो गई. आई बिकेम अ हाउसवाइफ एट वेरी यंग एज, मे बी 20-21. फिर उसके बाद ठीक है, चलने लगा, होने लगा. लेटली मतलब लास्ट ईयर से थोड़ा सा था कि ऐसे लगा क्रिबिंग हो रहा है, मतलब कुछ भी कर रही हूँ झुंझलाहट सी हो जा रही है. ये मैजिक बुक स्टार्ट करते ही सब चीज इतना चेंज हो गया. एवरीथिंग आई स्टार्टेड गिविंग ग्रैटिट्यूड फॉर ईच एंड एवरी वर्ड. मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, सब चीज इतना स्मूथली चलने लगा एंड लाइफ इज सो हैप्पी. एवरीवन इज लाइक, हाउ डू यू मैनेज टू आई हैव 3 children, आई हैव माय इन-लॉज, everyone. So how are you managing everything? अभी बीच में I didn't have a single staff because of the pandemic, but I was very happily and gratitude दे देकर मैं सारे काम कर रही थी and सब इतने अच्छे से हुआ. One day also I didn't get tired. मतलब and अभी राखी में I had to make food for 30 people. और मैं किचन में जाती, सबसे first thing I said was कि today my food is going to be awesome. I'm going to make an awesome food and everyone is just going to love it. जैसे ही मैंने स्टार्ट किया बनाना, आई सेड मेरी डॉटर ये टेस्ट करेगी एंड वन गो में शी इज गोइंग टू से दैट इट इज जस्ट ऑसम. और वही हुआ. 30-35 पीपल का खाना मैंने अकेले बनाया विद जस्ट वन हेल्पर एंड एवरीवन कॉल्ड अप एंड सेड दैट द फूड वाज टू गुड. मेरी डॉटर ने फर्स्ट टाइम टेस्ट करते उसने कहा कि मम्मा इट इज जस्ट ऑसम. मतलब कुछ भी मुझे और ऐड नहीं करना पड़ा, कुछ माइनस करना पड़ा. सो इट वर्क्स फॉर हाउसवाइफ्स आल्सो. इट वर्क्स लाइक मैजिक for my kids, for my son. मतलब he was a, मैंने आश्विन मैम के क्लास में भी शेयर किया था that there was a breakdown in my son's learning. but जैसे मैंने उसको रोज gratitude दिया दिन भर that he is doing very well, his IQ level is increasing, he's performing very well in school. and you won't believe last year से 1 में था वो, तब से उसके results में सिर्फ A grades आ रहे हैं. मुझे पता नहीं, ये नहीं कि उसने मिस्टेक नहीं किया या जो भी है, बट स्टिल द टीचर्स आर गिविंग हिम दैट ग्रेड एंड वेरी गुड. कमेंट्स ऑनलाइन भी हो रहे हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी. मैंने तो पैंडेमिक को भी इतना ग्रैटिट्यूड दिया कि हाँ, इसकी वजह से आई गॉट टाइम फॉर माई सन. आई गॉट फुल डे. मतलब इतने महीने, इस साल से मैंने अपने सन पे इतनी मेहनत की, उसका रिजल्ट है. एंड एक्चुअल में मैजिक बुक इज जस्ट बहुत अच्छा है. इतना अच्छा लगता है मुझे मैजिक बुक करके. अब मेरे हस्बैंड बोलते हैं ये इशू है बिजनेस में, तो मैं बोलती हूँ डोंट वरी, ये इशू है, डोंट वरी, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, कीप ऑन डूइंग योर जॉब, यू विल गेट व्हाट यू वांट एंड इन योर एज. एंड वही हुआ. एक वीक बाद ही सेइंग पता ही है ऐसे काम मेरा हो गया बहुत अच्छे से. तो मतलब घर में भी एवरीवन इज दे अंडरस्टैंड कि हाँ, ग्रैटिट्यूड से इतना होता है. मैंने अपने हाउस हेल्प के लिए इतना ग्रैटिट्यूड दिया. नाउ आई एम हैविंग 2 to 3 स्टाफ्स एट अ टाइम. So it is very good for homemakers also. Gratitude in every field works like magic. I can just say this. So wonderful sharing. So whoever Thank was you so talking about housewives, you can just ask and be very defining it, because half the things Ritu has already shared कि आपको worry, एक तो मैंने आपको बताया लेसन के टाइम पे भी, you don't have to worry, क्योंकि वरी करते हो तो आप नेगेटिव वे में आप डाल रहे हो फीलिंग्स, आपकी नेगेटिव फीलिंग्स जा रही है वरी करते ही. तो बच्चों के लिए, और ये बहुत स्वाभाविक होता है कि माँ बाप अपने बच्चों के बारे में चिंता करते हैं. आधे लोगों को अगर बोला जाए ना तो कहते हैं यार माँ बाप है, चिंता कैसे नहीं होगी. ब्लडी हेल्थ, चिंता करके कुछ कर सकोगे क्या? एक्चुअली हियर हमारे को ना बेसिकली व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि हमारे को अपनी लैंग्वेज बहुत सुधारनी पड़ेगी. मतलब हम जैसे छोटा बच्चा होता है, भाग रहा है,
तो हम कहते हैं कि गिर मत जाना, हम ये नहीं कहते कि संभल के भागो, राइट? सो it is the language that we have to work on, because we have seen, हमने ये देख लिया है कि our words make our world. मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ. आपने बहुत मैजिशियंस को देखा होगा जो मैंने I told you Gurpreet ji the last time we met. The magicians use the word abracadabra. All right. So I was really then when मैं जब से इस जर्नी में हूँ, so I got really fascinated कि abracadabra क्या होता है. Then I searched Google पे सब कुछ मिल जाता है. So I came to know it is a Hebrew word, and the real meaning of the word is I create as I speak. So word काफी self-explanatory है जो magicians use करते हैं, and it is similar to that. हम जो भी बोल रहे हैं हम उसको create करते जा रहे हैं. It is kind of a manifestation. We are like हम हर time manifest करते रहते हैं. हमें पानी पीना है, but पानी पीने में वो भी एक तरीके की manifestation हो गई है. But it is क्योंकि पानी बहुत एक simple चीज है. अगर आपके सामने बॉटल रखी है आप उसे पी लेंगे. There is no barrier between us and the water. But अगर ऐसे ही आपकी कोई जॉब है, मतलब आपकी जॉब में है जिसमें आपकी सैलरी मान लो 1 लाख रुपए है, और आपको कोई अच्छी चीज पसंद आ गई जहाँ पे आपको मान लो 1 करोड़ का फ्लैट लेना है, तो उसमें हमारा सबसे पहले बैरियर आएगा कि हम ये लेंगे कैसे, ना कि ये कि हम उसको एंजॉय कैसे करेंगे. सो वही है कि वो हाउ पे आपको नहीं सोचना है कैसे. जब आप कर रहे हो तो आप नहीं सोचो कि अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो नहीं ठीक होगा. तो ऑल दोज हु आर हाउसवाइफ्स, यू हैव टू बिलीव इन थिंग्स दैट दे विल वर्क ऑटोमेटिकली एज लॉन्ग एज यू आर थिंकिंग पॉजिटिव. तो खास करके बच्चों के साथ आप अच्छा सोचोगे तो वो अच्छा ही होगा. एंड यू डोंट हैव टू वरी. दैट इज वन थिंग. सेकेंड इज लाइक रितु सेड, यू हैव टू बिलीव दैट यू आर ऑसम. आप कुछ खाना बना रहे हो बहुत अच्छा बनेगा. डोंट फियर कि मुझे ना, मैंने ये कभी छोले बनाए नहीं है या मैंने कभी भटूरे बनाए नहीं है. डोंट वरी अबाउट दैट. एवरीथिंग यू कैन डू इट. सो एज लॉन्ग एज यू बिलीव एंड गो अहेड विद इट, थिंग्स रियली वर्क आउट लाइक मैजिक. एंड जो आपके पास है उसके लिए शुक्राना करो. मैं शुक्राना कि मेरे पास मतलब भटूरे बनाने के लिए सामान है यार. मेरे पास It's like अब उनको रात को उन्होंने क्या कहते हैं डर्टी डिशेस होंगी, तो डर्टी डिशेस इसलिए हुई क्योंकि उनके पास खाना बनाने के लिए सामान था. हाँ. तो उसमें भी मतलब जो भी चीज आपको बुरी नजर आ रही है उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से चेंज करने के लिए इतना आसान तरीका बताया है रोंडा ने कि आप उसके लिए शुक्राना करो. I mean, I have been into the social sector. हम ट्रेनिंग्स देते थे कि हाँ आपको हमेशा पॉजिटिव, हाउ टू थिंक पॉजिटिव इज द की विच शी इज टेलिंग यू. परसेप्शंस कैसे चेंज होती है जब आप उसकी अच्छाइयां ढूंढते हो. ये इतनी सिंपल लैंग्वेज में मुझे समझ में आया ना कि मुझे अपने करियर में ये एक्सप्रेस करना नहीं आता था कि कैसे 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 करते हैं. इतने कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स थे, इतने ये थे. बट दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग. जैसे ही आप शुक्राना करने लगते हो, आप अच्छाइयां ढूंढ रहे होते हो, वो जॉब है या बंदा है या आपकी हेल्थ है, एंड देन यू स्टार्ट सीइंग द होल थिंग विद अ न्यू पर्सपेक्टिव. Even about your health, if you start thinking, you will see it through a new perspective. when you आप जो आपके पास हेल्थ है, आपके पास अच्छी सेहत है, आपके एनर्जी लेवल्स हाई है, आपका स्टेमिना अच्छा है, या आप टायर्ड फील नहीं करते हो, जो भी आपके पास है. आई मीन इट कैन बी एनीथिंग. कभी आपके कुछ लोग हैं जिनको मतलब लाइक आई ऑनेस्टली टेल यू, मुझे सिर दर्द क्या होता है मुझे पता ही नहीं है. तो मैं तो आजकल रोज शुक्राना करती हूँ. एंड द फर्स्ट थिंग व्हेन आई हैड द स्ट्रोक, द डॉक्टर आस्क्ड मी, आपका सिर दर्द हुआ था? मैंने कहा भाई सिर दर्द तो मुझे आज तक नहीं पता है होता क्या है. सो एंड देन आई आफ्टर व्हेन आई केम इनटू दिस पैंडेमिक के टाइम में मुझे ये मैजिक बुक तभी मिली है. मैंने कभी मैजिक बुक नहीं पढ़ी थी. दो आई हैड बिकॉज आई वाज अ वेरी गुड वोरेशियस रीडर, तो मैंने सीक्रेट एंड पावर बुक पढ़ी थी रोंडा की. लेकिन मैजिक में इज द मोस्ट सिंपलेस्ट बुक, आई एम टेलिंग यू. उतने अच्छे से सीक्रेट एंड वो में भी नहीं बताते हैं जितना मैजिक बुक में बताते हैं. बिकॉज इट टोटली ये इतनी सिंपल जो बेबी स्टेप्स जैसे बोलते हैं ना, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं और फिर छोड़ देते हैं बीच में, आप चलो एंड देन यू लर्न टू वॉक. सो दिस इज द वे दिस बुक इज टोटली. एंड शी प्लेज गेम्स ऑल्सो विद यू, जैसे बच्चों के साथ पेरेंट्स खेलते हैं. मुझे बहुत अच्छी लगती है ये किताब इसीलिए. तो वो गेम्स भी खिलाती है आपको कि ऐसे एक मैनेजर जा रहा है, वो लिखेगा आपके बारे में. तो दिस इज जस्ट आई एम सो प्लेफुल टू फाइंड आउट कि अच्छा अगर मेरे घर पे भी कोई सुपरवाइजर है, या मेरे अगर आपके जो भी है, मेरी आपकी सास है, वो पीछे पीछे जा रही है तो देखना चाह रही है वाइफ आप किस किस चीजों पे ग्रेटफुल हो सकते हो, तो यू विल रिमेम्बर कि अच्छा मुझे किस किस चीजों पे ग्रेटफुल होना है. तो देन यू कैन इजीली
do it and you will find the things. And आप वाकई में simple to find grateful शुक्राना किस पे करना है, जो है क्या क्या उसकी लिस्ट बना लो, काम खत्म है. It's so simple as that. And if you do not understand, read the book. She has given you clues. ये देख लो, वो देख लो, वो देख लो. उसने clues भी दे रखे हैं उस chapter में, particular chapter में. So beautiful book, and please do it in your houses about things, and this will really help you. आज के affirmations निखिल आए हैं सर के? नहीं, आज आए नहीं है. It's already 6, so probably we'll skip it. If it comes, we'll pass it on into the group. ग्रुप में डाल देंगे, है ना, क्योंकि राजन सर भेजते हैं वो affirmations per day के. So we'll just send him a message also, and we'll get it and we'll float it in the group. So many thanks to all of you, and I hope your questions are answered. If still they are pending, कल भी पूछ सकते हो आप लोग, है ना? Thank you मैम. Thank you मैम. Thank you so much. Thank you. आपने बहुत अच्छे से समझाया मैम. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you. Good day. Thank you, everyone. Thank you, Gurpreet ji.